ओके जी, अब हम इस वीडियो में देखने लगेंगे कि यूनिटी 3D कैसे इंस्टॉल करते हैं। हाउ टू इंस्टॉल यूनिटी 3D फ्रेश ऑन योर सिस्टम। इस कंप्यूटर पर कभी यूनिटी इंस्टॉल नहीं हुआ, लेकिन प्रोसेस सेम है। अगर आपके पास ऑलरेडी यूनिटी इंस्टॉल्ड है फिर भी यही स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप कि आप यूनिटी की वेबसाइट पे जाएं, unity.com। मेन थिंग यू सी इज अ डाउनलोड बटन। लेट्स सी, जब आप डाउनलोड पे जाते हैं तो आपने डाउनलोड यूनिटी हब करना है। डाउनलोड द यूनिटी हब फॉर विंडोज या मैक, जो भी आपके पास है। यूनिटी हब एक छोटा सा प्रोग्राम है जो जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। ये बेसिकली इट्स एन इंस्टॉलर जो आपको इंस्टॉलेशन करने में मदद देता है। एक दफा डाउनलोड हो जाए तो आप इस यूनिटी हब को रन करें और इट्स ऑलमोस्ट डन। जब आप यूनिटी हब को रन करेंगे तो ये आपसे उसका सेटअप चलवाएगा। यूजुअली इट्स अ गुड आइडिया जहां बेसिक उसकी डिफॉल्ट लोकेशन है उसी पे सेव करने। सी की बजाय डी पे भी किया जा सकता है, बट यू शुड हैव सम स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल ऑन द सी ड्राइव। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद वो खुद ही रन यूनिटी हब की सजेशन देगा, आप उसको फिनिश करें। वेब ब्राउजर बंद किया जा सकता है। फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज साइन इन, सो यू शुड हैव एन अकाउंट ऑलरेडी। अगर अकाउंट नहीं है तो एक फ्री में अकाउंट बनाया जा सकता है। आप क्रिएट अकाउंट क्लिक करके अकाउंट बना सकते हैं। दिस इज अ सिंपल अकाउंट मेकिंग प्रोसेस। थियरी ये है कि अगर आपके पास यूनिटी का अकाउंट है और आप आई थिंक $10,000 पर ईयर बना रहे हैं तो फिर आप पेड यूनिटी मिलेगी आपको, अदरवाइज यू विल गेट द यूनिटी फॉर फ्री। सो एज स्टूडेंट्स और एज बिगिनर्स इट्स अ गुड आइडिया कि आप फ्री में डाउनलोड करें। यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट सो आई एम गोइंग टू यूज दैट। सो लेट्स साइन इन। Okay, finally I'm logged in. Open back in Unity Hub. और ये ब्राउजर से जो लॉगिन होके प्रोसेस वापस आया है तो इसने हमको लॉगिन कर दिया है। अब इट इज ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सजेस्टिंग कि आप यूनिटी एडिटर इंस्टॉल कर लें, एंड दैट इज गोइंग टू बी 2022.3.8 F1. So today, 1st of September, this is what it is suggesting me. It requires like 5 GB on the device. So I'll go ahead and install, agree with the personal edition license. You can read the terms if you want. And maybe later. So it has already started downloading Unity for you. So let's wait for the download to finish. लेकिन इंस्टॉल इसको एडिटर इंस्टॉल करते वक्त अभी करंटली इसने जो टूल्स डाउनलोड कर रहा है, एक तो एडिटर एप्लीकेशन है जिसको हम मेन यूनिटी एप्लीकेशन कहते हैं, और दूसरा ये WebGL बिल्ड सपोर्ट डाउनलोड कर रहा है। बाय डिफॉल्ट इसने डॉक्यूमेंटेशन भी डाउनलोड करनी है, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर हमने एंड्रॉइड डेवलपमेंट करनी है या iOS डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए भी एडिशनल टूल्स हम इंस्टॉल करने चाहिए जो कि इसने बाय डिफॉल्ट नहीं किए। So once the download is complete, we will try to edit the installation and add those tools. So let's sit back and see how the installation works. This WebGL build support means that Unity will be able to build your applications. It will have the necessary tools downloaded, जिसकी मदद से आप जब गेम को बिल्ड करेंगे, ऑब्वियसली प्रॉपर सेटिंग करने के बाद, तो वो आपको एक फोल्डर बना देगा जिसको आप वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं और वेब पे वो गेम खेली जा सकती है। सो WebGL सपोर्ट इसने बाय डिफॉल्ट देनी शुरू कर दी है।
पास्ट में जो सेटअप प्रोसेस था उसमें शुरू में और ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट फॉर अ बिगिनर वो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है, इसलिए इट्स जस्ट द सिंपल इंस्टॉल प्रोसेस दैट वी आर गोइंग थ्रू. Most of the tools have been downloaded already, and once the download finishes, then the install will start. So it's going to take some time depending on the speed of the internet and computer that you have. So you have to be patient. So the editor download is also almost complete. Once the download is complete, installation process apparently should start automatically. So download completed, installation process is underway. This is a usual automatic process going on, so we'll continue to wait. पेशेंस का इस्तेमाल करना, आराम से बैठ के वेट करना है. पहले डाउनलोड प्रोसेस काफ़ी टाइम लेता है, फिर इंस्टॉलेशन काफ़ी टाइम लेती है. और जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमें कुछ और टूल्स भी इंस्टॉल करने हैं मोस्ट प्रॉब्ली. डाउनलोड प्रोसेस को मॉनिटर कर रहा हूँ मैं. यू कैन सी द सीपीयूज pretty much busy in the task manager, and we are done with the editor application installation in general. Rest of the installation is going on, should take a few more minutes, so let's hang in there. One more step out of the way. Editor application and WebGL build support has been installed, and now the document decompression installation is going on and the install is complete. So I can expand on this. So you can see we have projects, installs, learn, community. So these are the releases that are installed, and now the UI looks a little different. It is installed for Windows and WebGL. Next important step I want you to follow is to probably go to the settings and add modules. And the modules that I want you to add are, number one, the Android support. You click on that and it is automatically going to get OpenJDK and Android SDK for you, and ask you to make iOS build support added as well. We click on continue. Once again, this is going to ask you for several terms and conditions acceptance, and it will take quite some time to download and install. So you have to be patient. Android SDK and NDK, terms of service, I agree, install, and the process has started again. You can see quite a number of things are coming down from the internet, and quite a few things are going to take some time to download and install. So the process continues. But now, if you are if this process is taking too much time, what you can do is you can go step by step. You can install the editor today. You can install the Android support tomorrow. You can install the iOS support day after tomorrow. But eventually, we'll need them every now and then. Please note, while this installation is happening, Microsoft Visual Studio Community Edition will also be installed along with that, because once you're coding, the code will be written in C#, and the default editor that comes with Unity is Microsoft Visual Studio. I don't know why this did not install earlier. So basic Android build support won't take a lot of time, but yes, every single component will take a few minutes depending on your internet speed. I know this is painful to begin with, but sometimes it's for the best that you actually get all the installation done in one go once you have a better internet available, and then you can use them later on throughout. The good thing right now is that it's downloading some of the components and then installing some of them, so things are happening in parallel, and these tools are slightly smaller than the things we were downloading earlier. So Android build support has been downloaded, it is installing. Microsoft Visual Studio is now installing, and Android NDK and SDK command line tools and
These two are being downloaded. See, the Visual Studio installer is now popped up because it is installing Visual Studio. So you'll have to answer a few prompts and see its separate progress in another window. So yeah, everything is happening. So as you have seen, Visual Studio wants us to select a workload. So I selected Windows Development Platform, and then I click next, and another download has started. At the same time, you can see in the background, everything has been downloaded and installed. So Visual Studio has been the slower part, but I think it's going to get done in parallel now. Some of the things you may not understand why they're installed, but everything which starts with Android, so Android SDK, NDK, command line tool, build tools, platform tools, all of them are part of the Android SDK, which is required for making apps for your Android phone. And then iOS build support is the main thing which is required for installing it for your iPhones. It will be tricky. We will make the build and we'll probably move this to Mac OS and then install it on the phone. But yes, it will be needed. Also, Visual Studio is being installed, which is going to be the editor where we write the code. So that's the last item that we need to work on. And we wait again. So here we are, the installation is complete, and we can just simply close this window, and you can see all these marks are ticked. Now, the total installation of Unity editor and support for web, Windows, Android, and iOS is complete. The next step would be to make a project and start making your game. And for that, you could actually go to your projects and create a new project. And that is left for another video sometime.